Hi viewer, Assalamu alaikum and adab. Uh, this is the continuation of the series of Institute of Chartered Accountants Southern Regional Committees program. Introducing to you various leaders, those who have helped their organization coming out of crisis and shaping the organization in a shape where they are now. Today we have a very distinguished leader, a very senior chartered accountant, and the CEO of Toyota Indus Motors, Mr. 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚 with us. 𝐂𝐻𝐵 Sahab, welcome. Thank you. Assalamu alaikum. Salam. 𝐂𝐻𝐵, as I mentioned, the fact that Jamali Saab is the fellow chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan. And in addition to that chartered accountant, he is an alumnus of both world-renowned business school, i.e. Harvard Business School, Advanced Management Program, and the Wharton Business School, University of Pennsylvania. He has the distinguished honor of being the youngest CEO of any automotive industry in Pakistan. Mr. Jamali is on the various committees of the different business organizations, i.e. Overseas Chamber of Commerce, and he is very active in various fields with the Institute of Chartered Accountants of Pakistan as well. I'll leave it to Mr. Jamali to introduce him and talk a little bit about his background, his professional activity before we embark on question and answer in a set pattern. Mr. Jamali, over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Rashid bhai, thank you very much for calling, and I would like to recognize and appreciate SRC who's doing this activities so that our voice goes across to the young leaders. So I would like to applaud them. Thank you very much for that. I think जिस तरह आपने बताया, the place I'm sitting is very close to my heart, Institute of Chartered Accountants. I think this institute gave me the first base to grow the education, even though it was very tough. I remember standing down when the results used to come, and for 3 or 4 nights we could not sleep before the ICAP results used to come, and those memories still haunt. So ये मैं ज़रा बताऊँ viewers को भी कि अब मुझे ख्याल है मुझे क्वालिफाई हुए अब more than 25 years. So शुरू में ये ज़्यादा था, अब आहिस्ते-आहिस्ते कम हो गया कि even after qualification I used to get these nightmares that शायद एक पेपर रह गया है या 2 पेपर रह गए, and I used to wake up. Slowly that has gone, it has eased out. अभी साल में एक दफ़ा हो जाता है, पहले महीने में एक दफ़ा इस तरह के नाइटमेयर्स आते थे कि फिर से वापस से पेपर देने. So I think this institute has got a real जिसको हम कहेंगे कि जो हमारी एटलीस्ट मेरी अपनी कामयाबी के अंदर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है. तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू डू अ ब्रॉडकास्ट सिटिंग हियर इन थ्रू दिस इंस्टीट्यूट. इन्हीं लाइब्रेरीज में शायद हमने अपने काफ़ी मेरे के दिन में 10-10 घंटे यहाँ गुजार के लाइब्रेरी में पढ़ाई की है. So I owe to this institute. This is such a magnanimous attitude, Mr. Jamali. और we pray कि आप further rise करें अपने profession में. But usually, people don't exactly remember the pains, usually don't exactly remember, and they don't even want to talk about the nightmares, the pains, and they all talk about, the good times which they face or which they go through after passing the examination. But you very rightly mentioned the psychological trauma, which very many people like me as well, they have or they had in past. But so nice of you. Since you have been with this organization, which is Toyota Indus Motors, for almost now 24 years, and you have been at the helm of the affairs since 2017. So basically, how would you describe this journey from professional point of view, and how ICAP helps you in achieving this milestone? When I started my journey with Indus Motors Toyota, I started as I think an assistant manager or deputy manager. I don't remember the exact definition. I think it was an AM.
and I started in the internal audit department. So I wanted to move to the industry. I was never fit for a audit firm. I tried very hard, and I have no this thing to say that I don't think I was too good with audit firm. कोई अगर थोड़ा अर्सा मैंने और गुजारा तो शायद वो खुद ही निकाल देते मुझे. So and that's why I think this. I was an auditor for Indus Motors. I was the manager as an audit there, and they offered me a job, and there was वो फाइनेंस की जॉब थी, लेकिन फिर फाइनेंस की जॉब में कोई और आ गया तो इंटरनल ऑडिट की जॉब है, and I wanted to move. I took that challenge कि even internal audit I didn't want to do it, but I said कि चलो आ जाते हैं. So I joined Indus Motors in the year 2000. 2000, exactly. Internal audit, and then things came up. Finance में, then there was a position. Some people resigned. I was asked to join finance. Spent about 3-4 years in finance. Again, जो main message ये है, and I'll tell you my journey. Then obviously I move. मेरे अपने mentorship में हमारे ex chairman थे जिनकी अभी 2020 में unfortunately death हुई, अली हबीब, उनका बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने मुझे बड़ी mentorship की. मुझे याद है 2004 बड़ा एक larger than life character था अली हबीब साहब का. एक बड़ा shape था उनका इस इंडस मोटर्स के फाउंडिंग डेज से लेके यहाँ तक पहुँचाने में. और मेरे पर्सनल कंट्रीब्यूशन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे हर जगह जो है एक उनकी एडवाइस. आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कभी हम इस क्राइसिस में फंसते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने उस टाइम में क्या किया होगा, तो वी टेक those things in mind. So then I moved to various departments. अच्छा अली असगर साहब, यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको. बड़ी आपने इतनी मुख्तसर सी बातों में ना आपने पूरा जिसको कहते हैं कि वो आपने एक कूजे में दरिया को समो दिया है. अभी आपने वो बात की जिससे बहुत सारे लोग खौफजदा होते हैं कि फेलियर से डरते हैं, लेकिन आपने बताया कि आप यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर ऑडिट फर्म, राइट? एंड मोस्ट ऑफ अस they hesitate in accepting this fact, and you in a such a courageous way you accepted the fact. Yes यार, मैं भाई वहां पे बहुत कोई अच्छा नहीं था. Then you talked about, because मैं अपने आप को आपकी पोजीशन पर रख रहा हूँ और दो कि मैं बड़ा डेयरिंग और सब कुछ रहा. I started off my career from internal audit और मैं उसी एक कुएं का मेंढक ही रहा, वहां से निकल कर आ ही नहीं सका. तो आप तो एक एग्जाम्पल हैं. इस हिसाब से मैं कहूंगा यू आर द सेकंड पर्सन हु आई एम विटनेसिंग एंड आई एम हैविंग एन ऑनर टू मीट. के एक हमारे दोस्त हैं नासिर जमाल साहब, वो इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हुआ, वो आज एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ हैं. किस तरह ये बैक ऑफिस जर्नी टू फ्रंट ऑफिस, इस पहले इस चीज को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने ये जो बात कर दी ना, इसके अंदर पूरी एक 1-1.5 घंटे की तो अलग से बात हो जाएगी आपके इन्हीं 3-4 जुमलों में. But this back office journey and lessons for the chartered accountants कि इतना flexible होना चाहिए. और आपकी एग्जाम्पल है कि कहाँ internal audit is supposed to be the back office of the back offices. I mean not even the finance, not even the strategy, business तो दूर की बात है. और उसके बाद leading front पे, इस पे थोड़ा सा. I think that's a very very important question. So मैं आपको बताऊं कि वो जर्नी जो स्टार्ट हुई ना वो क्या थी. So मैं उसी पे आ रहा था, तो मैंने अली साहब की बात की तो 2004-05 में उन्होंने मुझे एक ऑफर की. ओके, उन्होंने कहा कि यू शुड मूव इनटू द बिजनेस रोड. तो उन्होंने मेरे पास 4 ऑप्शंस रखे थे, एंड उसमें हमारी कंपनी का जो सबसे एक उस एरिया को कहा जाता था काला पानी, मीन्स दैट एरिया वेयर पीपल वुड नॉट वांट टू गो. And there was not वहाँ पे कोई इतना ग्लैमर नहीं था, वहाँ पे डिफिकल्टीज थी, द बिजनेस वाज नॉट डूइंग वेल. तो जो 4 ऑप्शन उन्होंने मुझे दिए उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, एंड आई पिक्ड अप दैट ऑप्शन. सो जब मैंने वो ऑप्शन उठाया तो मेरे बहुत फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, मेरे सीनियर्स ने, उस टाइम के मेरे इवन जो सीईओ थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अपने कैरियर के साथ जो है बहुत गलत कर रहे हो, तुम एक फाइनेंस के बंदे हो एंड यू आर टेकिंग दिस रिस्क. मैं कहा आई वांट टू टेक दिस रिस्क. किस डिपार्टमेंट में जा रहे थे? वो हमारा एक पार्ट्स का डिपार्टमेंट था उस टाइम पे, और आज हमारा सबसे शाइनिंग डिपार्टमेंट है. आज एवरीबॉडी वांट्स टू गो देयर, राइट? ठीक है. उस टाइम पे नोबडी वांटेड टू गो देयर. सो यू बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पार्ट्स डिपार्टमेंट. नो, आई वाज ऑफर्ड टू लीड दैट डिपार्टमेंट. ओके.
एंड देन अगेन वो 2 या 2.5 साल मैंने उस डिपार्टमेंट को रन किया, एंड देन ऑब्वियसली उसकी एरिया के बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, वो थी कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आए। तो I never looked back. I always took on the challenges that were thrown across me. And while you were doing any एक एरिया के अंदर आप अपने एंटीनास खुले रखें, क्योंकि हर कंपनी में लर्निंग एरियाज बहुत है। Very अगर आप अपने अपने आप को एक साइलो में बंद कर देंगे और सिर्फ एक 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 जगह देखेंगे तो आप अपना बेस नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते। सो आई थिंक वो कुछ मे बी मेरी पर्सनैलिटी में था। एक बंदा इंक्विजिटिव होता है ना दूसरी चीजों के बारे में भी, तो यू वांटेड टू लर्न मोर, वांटेड टू नो मोर, तो वो उन चीजों ने मुझे बड़ा हेल्प किया। So you became the most important part of that part department of automotive industry. No, I was never the most You led the department, No, right? I got an opportunity to learn in that department. I was neither today I am the most important, neither that time I was the most important. The most important is the team. जो उस टीम होती है वो टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। So the spirit is that you have to lead the team. Team always needs some leader, some person who keeps them motivated to achieve an objective, right? जी। And if that person is, somebody as resilient, as open-minded, as courageous like yourself, so definitely that department also becomes डेफिनेटली आप तारीफ लेने के लिए अगर तैयार नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस पर तो हम वो कर लेते हैं, बट डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसी बात थी कि उस डिपार्टमेंट के बाद, जब आपके छोड़ने के बाद लोग जाना चाहे होंगे उस डिपार्टमेंट में फर्दर। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे बाद जिसने वो डिपार्टमेंट को लिया उसने मुझसे बेहतर काम किया था। ठीक है ना, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैंने, इट वाज मी हु टुक द इनिशिएटिव राइट टू गो इन दैट डिपार्टमेंट, एंड आई एम श्योर मेरे बाद जो है उन्होंने भी उसको बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया। देखिए व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू ऑलवेज हायर पीपल हु आर बेटर देन यू and try to train your people better than you. Very true. Then only an organization will succeed. Second thing which is extremely important, I think जो मेरे आप टीम मेंबर्स से पूछेंगे, जो मेरा सबसे ज्यादा है कि I encourage people to make mistakes. ठीक है, मिस्टेक्स करना जो है ये सबसे अच्छी, मैं कहता हूँ कि वो चीज है जिसमें मिस्टेक्स करने से इंसान की लर्निंग बढ़ती है। लेकिन उसी मिस्टेक को रिपीट करना जो है ना, वो मेरी बुक्स में अलाउड नहीं है। सेम मिस्टेक आप नई मिस्टेक करें, हैव अ न्यू मिस्टेक एवरी डे, ओके, बिकॉज योर लर्निंग इंक्रीजेज व्हेन यू डू मिस्टेक। एंड जब आपकी टीम में से, जो मेरी टीम है, जब उनको मैंने ये एक फायरवॉल दे दिया कि मिस्टेक करना ओके है, ओके, तो दे स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लीडरशिप में, कि पीपल मेक डिसीजंस। एंड व्हाई डू पीपल डोंट मेक डिसीजंस? इज द फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। When you remove the fear, your organization starts moving. So मेरा एक simple management का एक फंडा इसको कह लें ये है कि सिंपल ये है, आप अपनी टीम को encourage करें, okay, कि it's okay if you make a mistake, but take a decision. So one of the empowering tool of the people is that, allowing them to commit mistake, because that is the reinvention of oneself, reinvention of a personality through mistakes, without committing that mistake and again and again. मतलब उर्दू में कह दूं, जो मैं अक्सर अपने, क्योंकि टीम मेंबर्स जो होते हैं हमारे प्लांट के, उनको भी मैं कहता हूँ कि एक जुमला है मेरा, वो है या जीतेंगे या सीखेंगे। वेरी गुड। मतलब हारेंगे नहीं, हारना ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि आप गलती करेंगे तो सीखेंगे। वेरी ट्रू। व्हेन यू लर्न समथिंग यू फर्दर मूव अहेड, सो जीतेंगे या सीखेंगे। ये मेंटोरिंग स्टाइल, ये डेफिनेटली आपके भी कोई मेंटोर रहे होंगे, यानी कि इतने करेजियस वे में, इतने बोल्ड वे में कि ठीक है जी आप लोग काम करें, यू आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस, एंड एज वेल एज आपके लिए जायज है कि जायज मिस्टेक करें। तो कोई ना कोई आपका भी ऐसा मेंटोर रहा होगा जिसको आप, जो बैटन पास कर रहे हैं आप इसमें। देखिए ऑब्वियसली जो टीम है हमारी, ठीक है ना, अगेन वो एवरी डे, एज आई सेड, कि मार्केट जो सिचुएशन है और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, उसमें काफ़ी एजाइल टीम की ज़रूरत होती है, तो वो है। अब आप, मेरा ख्याल है आपका जो सवाल है कि ये जो हर किसी का अपना अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होता है, एंड आप अपनी लीडरशिप जो डेवलप करते हैं वो कहीं ना कहीं से सीख के कर रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप ये कहें कि गॉड गिफ्टेड लीडर होते हैं। आप अपनी लीडरशिप को ट्यून करते हैं, लर्निंग फ्रॉम पीपल। आई वुड हैव पिक समथिंग फ्रॉम हमारे
आई वुड हैव पिक्ड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अली हबीब साहब। देन हमारे दूसरे जो सीईओ जिनके बाद मैंने बड़ा क्लोजली काम किया वो था परवेज व्यास साहब। Yes. उनके से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। फराज जुल्फिकार जो ओरिजिनल हमारे सीईओ थे जिन्होंने मुझे हायर किया था उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और आप लीडरशिप सिर्फ अपने सीनियर से नहीं सीखते, अपने जूनियर से भी सीखते हैं। Very true. बहुत सारी चीजें आपके जूनियर ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो आपको दिखा रहा होता है कि लीडरशिप की स्टाइल ये है। तो ये आपने अपना जो है ना ये एक माइंडसेट ओपन रखना है कि भाई कि ओवरऑल हर जगह जो है कोई ना कोई इवन एक डिपार्टमेंटल हेड या उसके नीचे कोई ऐसी चीज कर रहा होता है जो कि आपको लीडरशिप दिखा रहा होता है, तो आपने वहां से वो चीज सीखनी है और अपनी एक लीडरशिप को एक रोल बनाना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हर पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस शेप्स करते हैं लीडरशिप स्टाइल को। और ये जरूरी नहीं होता कि somebody is born leader and he is fit to There is that. no born leader. There is only one born leader. Right. And that was our prophet. Our prophet. That was a very good thing you just talked about. तो बेसिकली जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरनल ऑडिट टू फाइनेंस एंड देन फाइनेंस टू बिजनेस, क्या मुश्किलात आई और इन मुश्किलात को किस अंदाज से आपने ओवरकम किया? देखिए मुश्किलात तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू स्पेंड मोर आवर्स। सो इनिशियली आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स, आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। सो मैं अब जिस तरह अभी भी अपने जो नए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं ग्रुप में, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपके इनिशियल 5 to 7 ईयर्स होते हैं, इट्स ओनली हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि एज यू कीप ऑन मूविंग अप, एज यू गो इनटू लीडरशिप रोल्स, योर वर्क एंड मैनेजिंग पीपल, ये दो चीजें होती है जो आपने करना होता है। एंड एज यू मूव अप टू द पिरामिड, आपका मैनेजिंग टीम्स, मैनेजिंग पीपल का जो टाइम है वो ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। So when you start an organization, 100% is work. When you move another level up, 80% work at 20% you are managing teams and work. As you move up, then you 60-40. जब तक मेरे उस पोजीशन में आते हैं, तो work is what 90% is managing teams and managing people. Yeah, not even in-house teams. You are managing people in the government. You are managing dealers. You are managing vendors, all the stakeholders, the board members, right? So the Japanese. So 90% टाइम आपका इज मैनेजिंग पीपल, तो काम आपका सिर्फ 10% रह जाता है। लेकिन अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो 10% को एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान होता है। राइट सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बात की कि यू नो एज यू गो अप ऑन द pyramid, on the ladder of position or hierarchy, so people adjustment, that is one thing, people management, that is one thing. एक चीज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बसा होगा, दिल पे पत्थर रख के इस सारे रोल के अंदर। उससे बाहर आना या उस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से जब पर्सनल डायलेमा क्रिएट होते हैं लीडरशिप रोल के अंदर, वो किस तरह बंदा बाहर आ सकता है उन रोल्स, उस डायलेमे से या उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से, व्हेन यू मेक कॉम्प्रोमाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंट पोजीशन? बिकॉज नोबडी कैन से कि यार मैं सही पोजीशन पे गया, मैंने अपने प्रिंसिपल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या मैंने कभी कोई चीज ऐसी नहीं सुननी पड़ती है जो कि रिजिलियंस का फैक्टर हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात हो, वो क्या इम्पोर्टेंट है? ये सवाल जो है ना, ये हमारे इस मुल्क में बड़ा ही ऑफ है। हमारे अपने इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हमें सिखा देती है कि रेजिलियंस खुद ही आ जाती है। मतलब मैंने अपने 24 ईयर्स कैरियर में ऐसे क्राइसिस देखे हैं कि किसी की सुनना ना सुनना, वो आपको जो इकोनॉमिक सिचुएशन ही आपको सिखा देती है आप कितने रेजिलिएंट, फिर बाकी किसी की बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आई थिंक जो क्राइसिस जो है वो इतने मैसिव आते हैं इस मुल्क के अंदर कि आई थिंक वो रेजिलियंस ना सिर्फ लीडरशिप में आ जाती है, टीम में भी आ जाती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक ये वेस्टर्न वर्ल्ड का इशू हुआ, किसने कुछ बोल दिया तो इतना, वो आई थिंक बहुत छोटे मसले हैं। अच्छा, बड़े इशू जो है वो हमारे यहाँ बुरानी कौम है, मुसलसल ही मुसलसल ना, हमेशा हम कहते हैं इससे क्या बुरा होगा और आपको अगले साल इससे, बल्कि मैं अक्सर अपनी टीम से कहता हूँ कि यार मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यार दिस इज द वर्स्ट, वो अगले साल कोई और चीज वर्स्ट हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो आई थिंक मैंने देखा था वो था 2020 कोविड के अंदर। कोविड के साथ भी कुछ पर्सनल क्राइसिस भी थे, एंड देन उसी साल अली साहब की डेथ हो गई। अली साहब वाज अ वेरी बिग फादर फिगर, right? Okay, वो even though I was the CEO, a lot of times
कोई चीज ना हो तो उनसे मशवरा कर लेते थे, उनसे गाइडेंस मिल जाती थी। न्यू मैनेजमेंट स्टाइल आए, फिर ऑब्वियसली एडजस्ट करना। फिर आज हमारे नए चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, उनका लीडरशिप स्टाइल अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। और उस टाइम पे कोविड है। अब क्योंकि हम एक टोयोटा वर्ल्ड में हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हम कहते हैं यार सही ये मसला हुआ, एक काम करें ना, किसी ना किसी कंट्री में टोयोटा में ये मसला फेस किया होगा। हमने कहा हमें भी नहीं पता। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम वेयर वी हैड टू डिसाइड बाय आवर ओन कंप्लीटली विदाउट गाइडेंस कि करें क्या इन दिस कोविड सिचुएशन, प्लांट किस तरह स्टार्ट करें ना करें ये वो। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट dynamic times of testing the leadership, and I think that was something that I really learned and enjoyed. नाइटमेयर्स जो थे वो उस नाइटमेयर से ज्यादा सख्त थे। नहीं, वो नाइटमेयर एग्जाम वाला भी सुपर, वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी ऊपर है। सीए पास करना उस जमाने में मुझे याद है बड़ा मुश्किल। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्पेशली आपके पास और कोई रास्ता ना हो, okay, when you are completely broken, and the only choice is that you pass and then have to move ahead, वो नाइटमेयर से ज्यादा होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, इट्स गुड टाइम्स। नहीं, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये सारा है। और जो क्राइसिस आए, बिकॉज आप जब से सीईओ थे तो दो क्राइसिस स्पेशली, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया पाकिस्तान में, जो डॉलर रिजर्व हमारे बड़े डिप्लीट कर गए थे। उस वक्त हमने देखा कि ऑपरेशंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था, और एक कोविड का आया था। तो ये जो दोनों सिचुएशन थी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही, वन लेसन you learned and you really want to convey to your audience, to your managers, to your workers and to the members, whoever, public in general public को क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह, यानी कि इसमें सेलिंग करना, फिर सरवाइव करना और फिर निकलना, दो वी आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ इट बट स्टिल। देखिए मेन चीज ऑब्वियसली इसमें ये है कि यू कीप योर टीम्स टुगेदर, ठीक है। इट्स मोर अबाउट every individual has got their own experience, right? उनकी especially in situation में when you don't know what to do, okay, is about more hearing people, okay. So lot of idea from the team, and then you have to come up with your final conclusion. You just can't take a conclusion on in this situation. There's something जो है ना एक यूनिक चीज होती, एक you've seen it before, आपने कहा अच्छा इस तरह कर लो, but when things like balance of payment की situation थी, we didn't know what to do. I think our teams, our focus completely changed from production and sales to opening LCs and through payments, right? Through and sending remittances and getting your LCs open. तो वो पूरा focus जो टीम का वहां गया, and we said कि ये we'll catch up later. तो उसकी वजह से एक complete team ने वहां पे ये performance दी, and I think we were able to get out. I think it's some out of the box thinking of taking foreign exchange loans and then paying off, and then आपकी नियत सही होती है तो I think फिर अल्लाह भी। ये बड़ी important चीज जो आपने बात किया है कि जब आपकी नियत अच्छी होती है and you really want to serve the organization you work for and you really want to serve the nation you are part of, तो वहां से फिर आपको कोई invisible type of हेल्प भी डेफिनेटली मिल जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक खासा होता है लोगों का, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आस्क अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम लीडर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिफरेंट क्वेश्चंस कि कोई बंदा अपने आप को किस तरह डेवलप करे फॉर अ बेटर पोजीशन, नॉट ओनली फॉर द सीईओ बट किसी भी सीनियर के लिए, एंड दैट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट फ्रॉम बुक, अदरवाइज क्या एडवाइस होगी आपकी इसके? देखिए दो चीज अगेन आई सेड ना, फर्स्ट जिस तरह मैंने कहा कि आपने अपनी जिस एरिया में है वहां पे अपने आप की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, एंड यू हैव गॉट टू बी इंक्लूसिव, यू नीड टू बी ऑलवेज थिंकिंग कि और क्या चीजें लर्न कर सकते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीजें लर्न करने की होती है, और अभी भी आज भी ऑन अ डेली बेसिस आई आल्सो लर्न, सो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड सो दैट यू कैन मूव अहेड। ये तो एक हो गई वर्किंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल। देखिए एट द एंड ऑफ द डे, ओके, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, सो यू हैव टू लर्न डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी, उनको किस तरह हैंडल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको लोगों से मिलना बहुत जरूरी है।
आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए अज्यूम करें, क्योंकि वो आप काम तो सीख लेंगे अपनी, लेकिन वही बुकिश नॉलेज हो जाएगी। लोगों से मिलना, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस, टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, विच हेल्प्स यू फॉर फ्यूचर। ये चीज आपको थोड़ा सा पेशेंस भी देती है, लिसनिंग एबिलिटीज भी बढ़ाती है, जैसे कि आपने भी बताया कि कोविड के ज़माने में जो लिसनिंग एबिलिटी थी वो आपको बढ़ाना पड़ी। वजह ये कि लोगों का सुन के कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग था। डिसीजन मेकिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो व्हाट अप्रोच डू यू फाइंड मोर सुइटेबल for a person nowadays, for a relatively, you have the singular distinction of being the youngest CEO of the automotive industry. So what decision-making style do you like or do you use most? Is it the consultative one? Is it the one whereby, you think, yeah, whatever you thinking is right? I've heard about this, I've studied, I've discussed with seniors, something like that. देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्पावरमेंट। ओके, एम्पावरमेंट जो है ना वो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट। सो मैं अपनी टीम के डिसीजन नहीं लेता, मैं सिर्फ वो डिसीजन लेता हूँ जो मुझे लेना है, और मेरे डिसीजन, मेरा काम सिर्फ दो है, वो है HR और PR। HR is human resources, having the right person at the right job, right teams, and PR is government of Pakistan and government of state, उनको उनके साथ ये करना, ये मेरी डिसीजन मेकिंग का काम है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कैपेक्स करनी है, दे प्रपोज, ओके, ऑब्वियसली दे एट लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स माय फाइनल वर्डिक्ट, बट डिसीजन उन्हीं का होता है, डिसीजन टीम का होता है। एवरी डिसीजन कम फ्रॉम, एक्सेप्ट वन और टू, कोई आपने सोचा कि यार ये एक आइडिया आया है, यू डिस्कस विद द टीम कि ये चीज करनी चाहिए, अगेन डिसाइड वही करते हैं। तो डिसीजन मैंने उनके नहीं लेना है, हमारी टीम अपने डिसीजन खुद लेती है जो उन्होंने करना। लेकिन लोगों को इतना एम्पावर कर दो कि वो खुद अपने डिसीजंस ले। एम्पावरमेंट इज द की। एम्पावरमेंट इज द की। एम्पावरमेंट बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती, कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। राइट। की स्ट्रैटेजीज के ऊपर जब इनपुट का मसला आता है, लेट्स सपोज कि टोयोटा इंडस मोटर्स को दे वांट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, जो भी मार्केट है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो जो स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा आता है, तो क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट, कितना इनपुट होता है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन के अलावा CEO का, या जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें आइडिया का क्या चीज होती है? डू यू हैव एनी इनोवेशन हब इन योर ऑर्गेनाइजेशन और डू यू प्लान टू हैव देम? वी डोंट डिजाइन कार्स, राइट, सो दैट इज डन बाय टोयोटा फर्स्ट। वी हैव टू डू व्हाट, कि हमें राइट प्रोडक्ट, हमारी मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, उसमें क्या स्पेक्स होने चाहिए, ये हमारी काम है। वी शुड नॉट से कि हम बड़ा इनोवेट करते हैं। इनोवेशन होती है जापान के अंदर या थाईलैंड के अंदर, जहां वो गाड़ियों को डिजाइन करते हैं। तो हमारी इनोवेशन क्या है कि हम अपनी मार्केट को समझे और उस मार्केट के अंदर कौन सी स्पेस में कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से लेके आए। ये जब होता है तो ऑब्वियसली इसमें डिस्कशंस भी होते हैं, इसमें ओपिनियंस भी होते हैं, बट अगेन इट कम्स फ्रॉम वेयर? कैन आई डिसाइड? नो, इट हैज टू कम फ्रॉम द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए। उस कस्टमर को करने के लिए जो टीम जो है वो सर्वे करेगी, सर्वे के रिजल्ट्स लेके आएगी, उस रिजल्ट्स की बेस पे एक डिसीजन होगा। जब इस बेस पे डिसीजन हो रहा होगा तो फाइनली मैंने क्या करना है, कस्टमर की जो वॉइस है उसको एक्सेप्ट करना है। सो ऑब्वियसली एम्पावरमेंट वो नीचे से ऐसा नहीं है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने खुद से अपने डेस्क पे बैठ के डिसाइड कर लिया, उनका भी एक प्रोसेस है। सो एक प्रोसेस के थ्रू वो डिसीजन मेकिंग होती है। कोई कैंपेन लेके आनी उन्होंने, तो उनका डिसीजन है, वो ऑब्वियसली डीलर से फीडबैक लेंगे, कंज्यूमर फीडबैक लेंगे, देखेंगे कंपटीशन क्या कर रहा है, उसके बाद वो करेंगे। अगर प्रोडक्शन में कोई चेंज करनी है तो प्रोडक्शन में अगर वो है तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या समझते हैं। तो वो जो डिसीजन 99% वो जो डिसीजन लेके आते हैं इज इम्प्लीमेंटेड। 1% कभी ऐसा होता है कि नहीं यार इसको अभी नहीं करना चाहिए, इसको होल्ड कर लो, कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी दे आर नॉट सीइंग, यू कैन सी कि यार इकोनॉमिक सिचुएशन भी सही नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट अभी रोक लेनी चाहिए। दैट कुड बी 1%, बट यूजुअली इट्स देयर डिसीजन।